Hi, everybody. I welcome you here in this third session of reading comprehension. Dear student, up to now, uh, I have completed two sessions of reading comprehension. One was from the prose textbook, and second was from the external passages in order to understand how unfamiliar, unknown passages to understand in this paragraph. Here is a third session. In this one, I will again repeat the same one. What is reading comprehension and what are their steps to complete within short span of time? See here, reading comprehension is the understanding of what particular text mean and the ideas the author is attempting to convey both textual or subtextual. In order to read any text, your brain must process not only the literal words but the piece but also their relationship with one another, the context behind words. Here we have five paragraphs today. In these five paragraphs, we have almost 23 MCQs, in which what you have to do, you have pen and copy. Whenever we read out the all, we will attempt question answer through these steps, and then we will see in the last moment what that whether we have encircled accurate answers or not. So this is just activity based session and very interesting indeed. Now see, there are four steps as I have mentioned twice a time. First step is what? Skimming or skim. What is that? A tool to read more in less time. Time budget. You have to go through what we have to find. See, read slowly to understand. Key sentences are topic sentences where we have to find meaning, concept, theme, title, main idea, purpose of the passage. Keep reading with your summation in mind and yet yourself stop and repeat the process whenever the passage becomes confusing to you. Second step is analyzing. What analyzing? When you understood the theme, concept, main idea, you have to analyze, read questions with answered MCQs so that you have the idea what is present information or knowledge and what you have to see in this way, so that you may go to the next step. Next step is your scanning or scan. Scan is a tool to read specific fact of the passage. It is a process reading text quickly in order to find specific information, facts and figures or names, and find out if a series of statements are true or false. So you have to find this step as well in this regard. See, a tool to read specific fact of the passage in order to find fault in this regards in proper way. Fourth step is what? Fourth step is matching. You have to match whatever the requirement of answer and questions are, that it is attempt MCQs with 100% accuracy. So this is what I have told you to do in this regards. Student, we have 23 MCQs. Now student, this is passage 1. Read the passage carefully. Carefully means concentratively, and answer the questions given below. The scientist is more interested in doing scientific work than in defining it. Yes student, tell me in which lessons of the prose this passage is taken from. It is taken from Science and Scientist by
F. Sherwood Taylor from the first year class. See here what is written in this one. Scientist is more interested in doing scientific work than in defining it. He sometimes says that a piece of work or book is unscientific, and he usually means by the phrase that is inexact, that is badly arranged, that it jumps to conclusions without sufficient evidence, or that the author has allowed his personal prejudices to influence his report. By scientific work, then we mean that which is as exact as possible, orderly in arrangement, and based on sound and sufficient evidence. Moreover, it must have no object except to find out the truth. Perhaps science is more clearly defined by saying that it is firstly a vast collection of facts expressed in exact and unambiguous language is such a manner that anyone who cares to take the trouble can list the truth, and secondly a collection of rules or laws which express the connection between these facts. This does not sound very interesting. It is extremely important as long as hunted for knowledge in a random sort of ways and believed each other's assertion without testing them. Knowledge made negligible progress once they began to make sure that their facts were right by totally experiment for themselves. Science begins to grow. Now this is all about what I say. This is passage screenshot may kindly do. But now what we have to do, we have to read out again silently. It's your task again. Read out. Yeah. Okay, this is first portion. First portion of skimming. Coming to the sentences, questions. Now students see, these are the questions. In that questions, what you have to do, you have to answer the questions. This is first paragraph. We'll discuss, then I will tell you which one is the correct answer. But however, what the next four paragraphs are there, you have to note down, and in the last you will be given accurate answers of these questions. The question number one: why is a book unscientific according to the passage? Because of author has not given his personal views and ideas in it. Because it is exact, orderly in arrangement and based on evidence. Third, because it is inexact, poorly arranged and based on personal values and beliefs. Because its purpose is to find out the truth. Yes, tell me which one is correct. The correct answer is C. Because it is inexact, poorly arranged and based on personal values and beliefs. That is unscientific one. Question number 2, that is, what do you mean by scientific work? A scientific work is based on values and judgment. B, a scientific work is exact, poorly arranged but based on evidence. C, a scientific work is inexact, poorly arranged and based on values. A scientific work is creative and imaginative. पहिरियों त सिधो सो ग़लति आहे, डी त सफ़ा ग़लति आहे. हाणे बचा ॿ आहिनि विच में. अ साइंटिफिक वर्क इज़ एग्ज़ैक्ट ऐं ॿियो आहे साइंटिफिक वर्क इज़ इनएग्ज़ैक्ट.
हिन जो मतिलबु आहे त साइंटिफिक वर्क में एग्ज़ैक्टनेस खपंदी आहे, यूनिवर्सलिटी खपंदी आहे। ऑप्शन बी सही आहे। नंबर 3, which one of the following is correct statement? स्टूडेंट इहो ज़हन में ज़रूरु रखंदा कयो, स्टूडेंट स्टेटमेंट में आइडिया थो पुछे, ना माना थो पुछे, करेक्टनेस थो पुछे या इनकरेक्ट थो पुछे, इन्हनि शयुनि खे ज़हन में ज़रूरु रखिजो। क्वेश्चन नंबर 3 छा आहे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट? साइंटिफिक वर्क इज़ एग्जैक्ट, पुअरली अरेंज्ड एंड बेस्ड ऑन वैल्यूज़। हिन में वरी ॾिसिजो, when men hunted for knowledge randomly and believed each other's finding without testing them, science began to grow. ॿियो वरी आहे, when scientific began to test each other's finding by doing experiment, science began to grow. Yes, C सही आहे बिल्कुलु। उन खां पोइ वरी चोथों आहे असांजो, which one of the following is incorrect statement? ॿुधायो तव्हां, पढ़ो। छा थो चए पियो? साइंस इनकरेक्ट हिननि में कहिड़ो आहे? साइंस इज़ दी वास्ट कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन क्लियर लैंग्वेज। यस, साइंस त इहा हूंदी आहे, सही आहे, पर इनकरेक्ट खपे असांखे। साइंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स आर लॉज। हा, हुन में रूल्स एंड लॉ बि हूंदा आहिनि, इहो बि सही थो लॻे, माना असांजो जवाबु इहो बि न आहे। when men hunted for knowledge randomly and believed each other's finding without testing them, सिधी सही ॻाल्हि आहे, साइंस में टेस्टिंग थींदी आहे, विदाउट टेस्टिंग न थींदी, इहो सही थो लॻे, पर चोथों जवाबु न छॾणु घुरिजे। द ऑब्जेक्ट ऑफ साइंस इज़ फाइंड आउट नथिंग बट ट्रुथ। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे, हुन में ट्रुथ हूंदी आहे, माना असांजो ए, बी ऐं डी इहे जवाब सही आहिनि, पर असांखे इनकरेक्ट खपे, उहो आहे ऑप्शन सी। स्टूडेंट, मां तव्हांखे ॿुधायो आहे त जेको एंट्रेंस टेस्ट में सुवाल ईंदा, 2 पैराग्राफ ईंदा, उन्हनि में 2 सुवाल ईंदा, पर हीउ हिकिड़ो मॉडल, हिकिड़ो पैराग्राफ ॾिनो वियो आहे। उन मॉडल पेपर में अहिड़े क़िस्म जो सुवाल, कहिड़े क़िस्म जो सुवाल कीअं अची सघे थो, इन जे लाइ 10 सुवाल ॾिना विया आहिनि हिन में। त माना उन मां कहिड़ी एक्सपेक्टेशन रखी सघूं था पैसेज मां, कहिड़े क़िस्म जो वोकेबलरी बि उन जे हिसाब सां अची सघे थी पई। सी, the word hunted for used in the above passage can best be replaced by। hunted for बोल्ड बि हूंदो, थी सघे थो न बि हुजे पैराग्राफ में। हिन में ॾिसो, hunted for जो मतिलबु आहे कंहिं शइ खे तलाश करणु, sought after, go away from, propagate या disseminate। sought for जो मतिलबु आहे हासिल करणु, go away from हितां परे भॼाइणु, propagate कंहिं शइ खे शोहरत ॾियणु, disseminate जो मतिलबु इहो ई आहे कंहिं शइ खे मशहूरु करणु। सो असांजो ऑप्शन ए इन जे मुताबिक़ बिल्कुलु सही आहे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय जम्प्स टू कंक्लूजन्स? हिते हिकिड़ो फ्रेज़ इस्तेमालु थियल आहे, इन में इन जो मतिलबु छा आहे? ॾिसूं, पढ़ूं। कैलकुलेट आफ्टर कंसिडरिंग फैक्ट, कंक्लूड आफ्टर कंसिडरिंग, माना सोचे सम्झी उन जो असां जवाबु कढूं, ऐं जम्प्स टू कंक्लूजन मतिलबु आहे बग़ैर सोचण जे हुन जो जवाबु कढी छॾियूं। मेक अ हेस्टी जजमेंट, हेस्टी माना तकड़ आहे, मेक अ हेस्टी जजमेंट बिफोर कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स। ॿियो आहे ब्रिंग टू अ क्लोज या वाइंड अप। वाइंड अप जो मतिलबु हूंदो आहे त कंहिं शइ खे ख़तमु करे छॾणु, पर बी ऑप्शन वधीक सही आहे, मेक अ हेस्टी जजमेंट, जल्दीअ में का जजमेंट ॾेई छॾिजे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाणे वरी छा थो पुछे? द मीनिंग ऑफ द वर्ड असर्शन यूज़्ड इन द अबव पैसेज इज़। असर्शन माना का स्टेटमेंट, को दावा, को क्लेम। हिते आहे क्लेम, डिनायल, कंट्राडिक्शन, कंकॉर्ड। सिधो सौ आहे त क्लेम असांजो हिन में ऑप्शन आहे। हाणे वरी असांजा 3 ॾिना विया आहिनि एंटोनेम। द एंटोनेम ऑफ द वर्ड नेग्लिजिबल मीन्स, जंहिंखे कंहिं शइ खे इग्नोर करे छॾिजे, उनजो एंटोनेम छा थींदो? एंटोनेम थींदो कंहिं शइ खे अहमियत ॾियणु, उनजो आहे छा? सिग्निफिकेंट। ट्रिफलिंग माना मामूली, नेग्लिजेंट माना जंहिंखे नज़रान कजे, सिमाल माना मामूली या नंढड़ो। सो सिग्निफिकेंट हिन जो ऑपोज़िट वर्ड बिल्कुलु सही आहे। नंबर 9, द एंटोनेम ऑफ वर्ड अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस जो मतिलबु आहे अनक्लियर, अनएम्बिगुअस जो मतिलबु छा आहे? क्लियर, राइट। सो हिन में असां अचूं त हिन में असांखे छा थो चए पियो त इन जो एंटोनेम छा आहे? एंटोनेम हिन में छा थींदो?
Yes, the antonym of the word unambiguous is unclear या सीधी सही माना थी वही lucid aphoristic या coherent हिन में असांजो ऑप्शन सिधो सवां आहे कहिड़ो lucid. Number 10, the opposite word of random is haphazard, systematic, disorganized या efficient. हिन में छा थींदो हिन में थींदो systematic. Now student, this is just in haste to do this one. Come to the next point, next passage. The passage is very familiar from second year in Astronomer's View of the Universe by James Jeans. It is first ever paragraph, very important one. Read out the paragraph and you will find very interesting information in this regards. I will not even discuss which one is the accurate or correct answer, but you have to note down in your copies. A few stars are known which are hardly bigger than the Earth, but the majority is so large that hundreds of thousands of us could be picked. Read out, because skimming means read yourself in limited time. Go through yourself and understand and calculate how many minutes are taken from this paragraph. Have you done skimming? Should we proceed to the second step, that is considering read out the question answers to match and to scan the things? Read out. Okay. Now these are the questions. What is the main idea of the passage? What is the message of the passage? The giant stars in the universe are equal to the total number of seashores. A few भी लिखला, mostly भी लिखला, giant भी लिखला, पर कहिड़ो सही आहे? The total number of stars in the universe is infinite. The existence of the earth is so tiny as compared to the total substance of the universe. A few stars are moving in the universe as lonely entities. अची जवाब. I won't tell you myself. मां तव्हांखे न ॿुधाईंदुसि, पर नोट कयो, आख़िर में ख़बर पवंदी त रीडिंग कई आहे या सुता पिया आहियो. ओके. Question number 2. Which one of the following is a correct statement? 4 जवाब कोन ईंदा पैराग्राफ में ईंदा रुगो 2 क्वेश्चन, but we are making practice. Right. Which one of the following is a correct statement? हिननि जी करेक्ट स्टेटमेंट कहिड़ी आहे? माना हिन जो मतिलबु सिधो चऊं आहे, हिन में 3 स्टेटमेंट ग़लति आहिनि, हिकिड़ी सही हूंदी. A few stars are moving in the universe as lonely entities. Most stars are equal to the size of the earth. हिननि ॿिन्ही जुमलनि खे few, most हेठि मथे करे ॾिसिजो त हिननि में को मसइलो त कोन्हे या साॻा त कोन्हनि. This vast multitude of stars is stationary in space. थोड़ो ट्रिकी जुमला हिन में सिलेक्टेड थियल आहिनि. Most of the stars are moving in the universe as lonely entities. हाणे ॾिसो हिननि जा जवाब
ॿ थी विया, हाणे आहे वरी स्केल मॉडल मथे बोल्ड बि थियल आहे। इन जो मतिलबु आहे, इन जी माना घुरंदो हूंदो, द फ्रेज़ स्केल मॉडल इन द पैसेज मीन्स फॉर इंस्टेंस आहे, सेम प्रोपोर्शन आहे, रोल मॉडल आहे, डिस्टेंट मेजरमेंट आहे। ये स्केल मॉडल पढ़ियो त हूंदो फिजिक्स में या कंहिं सब्जेक्ट में। फोर्थ क्वेश्चन, द वर्ड स्पेशियस used in the above passage can best be replaced by छा पंदो, फास्ट पंदो या वास्ट पंदो या पेस पंदो या नेरो पंदो। ओके, हैव यू selected the best answer? So that you have to check yourself in the last page whether you have corrected or not. Come to the next passage. That passage is very small from the first year. After the war came for the time for the final settlement. जल्दी ॿुधायो लेसन किथां वरितो वियो आहे, पैसेज कहिड़े मां आहे, कहिड़े लेसन मां आहे? अची वियो? पाकिस्तान ज़िंदाबाद, जेको पहिरियों लेसन आहे फर्स्ट ईयर जो। आफ्टर द वार केम द टाइम फॉर द फाइनल सेटलमेंट when several more meetings and discussions had failed to bring about agreement. Britain declared that she was going to give full self-government to the people of India. पढ़ो साईं, पढ़ो, पाण पढ़ो, 30 सेकंड्स जे अंदरि पढ़ो ऐं उनखे अंडरस्टैंड कयो, थीम खे, आइडिया खे, वर्ड्स खे। मुंहिंजे ख़्याल में को बि ॾुखियो वर्ड कोन्हे हिन में। पढ़ो सवाल। What is the main idea of the passage? A. The British government does not want to leave country. Through meetings and discussions, matter can be solved. लगन तो सब सही था। The subcontinent must be handed over with possible solutions. या the settlement could have been made before the Second World War. Option ॻोल्हियो। Do not be hasty, confused, double-minded, but should be agile-minded and your mind must be refreshed as well. Second question ते अचो वरी। Second question आहे, before the final settlement, the country faced which of the following crisis? पाकिस्तान जी सेटलमेंट थी त पाकिस्तान में कुझु माना सेटलमेंट में कुझु क्राइसिस आया। कहिड़ा? थ्रेट ऑफ सिविल वार, पावरलेस गवर्नमेंट, डिवाइडेड गवर्नमेंट या ऑल ऑफ देम। ॾिसो मां नथो ॿुधायां हिन जे मुताबिक़। मथे ॾिसो हिकिड़ी जॻह ते छा इस्तेमालु थियल हुयो, हिकिड़ी जॻह ते इस्तेमालु थियल हुयो, I just see yes, मथे इस्तेमालु थियल आहे, हे लफ़्ज़ आहे, the word she is passage refers to. शी छाखे थो चयो वञे, औरत आहे या को ॿियो कुझु आहे? माउंट बेटन, इंडिया, ब्रिटेन या मिसिस माउंट बेटन? छा थो लॻे तव्हांखे? शी लफ़्ज़ कंट्री जे लाइ, मदरलैंड जे करे, ऐं गवर्नमेंट जेके हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे बि असां उनजे प्रोनाउन जेको आहे शी जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। बहरहाल हिते जेको बि आहे उनजो तव्हांखे आंसर कढणो आहे। नेक्स्ट पैसेज। This passage is read the passage concentratively, carefully, and answer the questions given below. I should say the reawakening Asia, nations of Asia, your independence will not be very difficult to preserve. ॿुधायो त साईं लेसन कहिड़ो आहे? जल्दी ॿुधायो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यस, कहिड़ो लेसन आहे? रिफ्लेक्शन ऑफ द रीअवेकनिंग आहे या लियाकत अली खान वारो पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड आहे?
AI reflections, reflection of Reawakening East, Burton Russell. I should say to the reawakening nations of Asia, your independence will not be difficult to preserve, especially in view of the division of the rest of the world into the hostile camps. Pado, pado, pado. हिते थी सघे थो तव्हांखे थोरो आइडिया जो प्रॉब्लम थींदो हुजे, पैसेज थोरो वॾो बि आहे. हाउ एवर it is not necessary to read only once, but read twice, thrice in order to understand and save the time as well. टाइम बि बचाइणो आहे, सम्झणो बि आहे हिनखे. ऐं हीअ पैसेज तव्हांजा लेसन पढ़ियल आहिनि. इंटरमीडिएट बि रेगुलर हुजणु घुरिजे. फस्ट ईयर जा इंटर जा जेके लेसन्स आहिनि उन में रेगुलरिटी होप तव्हां पढ़िया हूंदो, हुनखे अंडरस्टैंड बि थी हूंदी प्रॉपरली. छो त ज़्यादातर एंट्री टेस्ट में लॻे पियो त पैसेजिस हिननि टेक्स्ट बुक मां प्रोज़ मां ई ईंदा. बाबा अची वई सम्झ में ॻाल्हि? शुड गो टू द क्वेश्चन्स. ॾिसो मां थोरो टाइम में वधीक थो रखां पियो तव्हांजी जीअं अंडरस्टैंडिंग थिए. दिस लेसन इज़ टेकन फ्रॉम बर्टन रसल्स रिफ्लेक्शंस द रीअवेकनिंग ईस्ट. रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट. बोल्ड वर्ड बि आहिनि, हिदरडो, डिस्पोर्ट. हलो अॻिते. शुड वी गो अहेड? ओके. जेकॾहिं मां तकड़ थो कयां त तव्हां पास कजो, स्क्रीन शॉट कजो. अंडरस्टैंड करिणो आहे छो त हिनखे स्केप नाहे करिणो. ओके, प्रोसीड. Question number 1. Shalikala, what is the main idea of the passage? Asian countries must follow the path of Western to display their energy to be dominant over them. Asian countries should learn from the West not to fight but prevail mutual respect that the Western lacks. लगे तो माना जड़ो मैच तो करे पियो पर ॾिसूं. It is very difficult for Asian people to protect, preserve and can promote their country strongly. हाँ, एशियन की एतरी ताकत हुजे न. Asian countries be tortured and oppressed by the hands of Western. Hello, कोलियो question. Question number 2. What is, which one of the following is correct? इनमें भूलजो न correct है incorrect में. ये correct statement है. The East throughout the last 5 centuries has displayed extraordinary energy. ईस्ट हूंदो आहे वेस्ट हूंदो आहे? हा ॾिसिजो सही थो थिए. त ई ग़लति ख़बर ऐं सही जी पइजी वेंदव. इहो वेस्ट हुयव. हुन स्टेटमेंट तव्हां पढ़ंदो त वेस्ट ईअं कयो आहे, ईस्ट न कयो आहे. Western discovered necessaries and comforts which aid happiness to human being. ॾिसो इहो बि स्टेटमेंट में मथे लिखियल आहे. The love of power over human being is one of the faults of Eastern people. If Asian follow Western, they will preserve their independence.
इहो बि आहे, बी बि आहे, डी बि आहे। ॾिसो हिन में हिकिड़ो हूंदो अहिड़े क़िस्म जो। नंबर 3, द वर्ड hitherto इन द पैसेज मीन्स, पढ़ियो किथे वर्ड hitherto? हिते बि आहे। तव्हां इहो जेको जॉन मिल्टन जो पोयम हुयो सैमसन एगोनिस्ट, हुन में बि वर्ड आहे इहो hitherto। माना छा थो पुछे? वर्ड hitherto इन द पैसेज मीन्स अप टू डेट, अप टू नाउ, अप टू डेटेड, शार्टली, या अप टू डेट हूंदो या अप टू नाउ हूंदो। बहरहाल ॾिसो, अप टू डेट ऐं अप टू नाउ में वरी फ़र्क़ु आहे। इहो थींदो अप टू नाउ। हलो, ॿुधायोमांव हिकिड़ी मार्क वधी वियव। द वर्ड डिस्पोर्ट्स यूज़ड इन द अबव पैसेज कैन बेस्ट बी रिप्लेस्ड बाय, छा थो घुरे? सेनोनेम। अ जस्ट रूलर, जस्ट रूल जो मतिलबु आहे अहिड़ो रूलर जेको इंसाफ़ पसंदि हुजे। टायरेंट, ज़ालिम हुक्मरान। पेट्रियोट, हुबुल वतन हुक्मरान, हुबुल वतन में माण्हू। डेमोक्रेट, जमहूरियत पसंदि। कहिड़ो थींदो वञे? डिस्पोर्ट जो मतिलबु छा आहे? लेसन पढ़ियल हुजे हा त मसइलो ई कोन थिए हा। वोकेबलरी इज़ देयर कैन बी हिंड्रेंस फॉर increasing your numbers in entrance test. So vocabulary plays a great role in order to enhance your capability in entrance test and as your own achievement. हलो, इन्हनि खे नोट कयो सभिनी खे, टिनी जा 4 हिन में बि क्वेश्चन आहिनि। कहिड़ो हिननि में नोट करे छॾिया तव्हां? पहिरियों, ॿियों, टियों, चौथों। हाणे आहे असांजो लास्ट जेको आहे पैराग्राफ। पहिरियों त ॿुधायो जेको आहे इहो लेसन वरितो किथां वियो आहे, इहो ॿुधायो। यस, however it must be recognized that the science has its limitations. Science and scientist, it must be recognized that science has limitations। पढ़ो, आराम सां पढ़ो, इन में ग़लती न थिए सफ़ा। First year जो lesson, I think that is very familiar lesson for you people। एहसासु थींदो हूंदो हिकिड़ो त असां फस्ट ईयर जी प्रोज़ जी रीडिंग प्रॉपर कई आहे या न कई आहे। छो त जेतिरा दफ़ा तव्हां रीडिंग रोज़ कयो, रोज़ हिकु ॿ पेज रोज़ पढ़ो, उनजी मीनिंग कढो, तव्हांखे वर्ड वोकेबलरी सेनोनेम एंटोनेम मिली वेंदा, मीनिंग मिली वेंदी, रीडिंग जो माना हिकिड़ी हैबिट ठहंदी। इहा ज़रूरी आहे। हलो, गॉट इट फ्रॉम स्किमिंग। हलो, अॻिते वधो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Now there are questions. Here questions आहिनि, सिर्फ़ु 2 क्वेश्चन आहिनि हिन जा। इट कैन बी इनफर्ड, इनफर्ड जो मतिलबु छा आहे? अज्यूम्ड, या वरी हिन जी माना ॿी थींदी वञी, इट कैन बी कंक्लूडेड, इट कैन बी अज्यूम्ड। इनफर्ड माना इनखे ईअं सम्झी सघिजे थो। इट कैन बी इनफर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द ऑथर थिंक्स। छा थो हिन में ॿुधाए? इहो सुवाल पढ़ो तव्हां पाण। Nobody will guide you in examination that what is the meaning and words meaning is there, but take the responsibility yourself to understand all these things.
काथे प्रॉब्लम थींदो हूंदो सवाल जी माना कान थी अचे, काथे प्रॉब्लम थींदो हूंदो आंसर्स जेके उन्हनि जी वर्ड्स जी मीनिंग प्रॉपर कान थी अचे. So try to be good reader and faces difficulties in these regards. ॿियो सवाल आहे बाबा, according to the paragraph, science applies certain values. Which of the following describe these values? Truth and justice, love of country and accuracy, truth and accuracy, justice and accuracy, truth and love of country. जेकॾहिं ज़हन आहे पैनिक थियल इम्तिहान में मिलंदो ई कोन तव्हांखे. Now see student, you have noted all answers from the 4 paragraphs. Now we'll check you, there is a result whether you have done it or not. If you have done more than 10 or 11, you are extraordinary. If you have done 100%, you are intelligent, you are agile minded, but should not be less than 10, right? Okay, coming to the answers. These are key answers of your discussion, what you have read and understood from, and reading, comprehend what you have done. Passage number 1, as I have told you. Passage number 2, पहिरें जो C, ॿिए में D, टे में B ऐं चौथे में बि P. अलाए तव्हांजा कहिड़ा सही आहिनि कहिड़ा ग़लति आहिनि. पैसेज नंबर 3, पहिरें में C, ॿिए में D, टे में C. पैसेज नंबर चौथे में पहिरें में B, ॿिए में B, टे में B, चौथे में B. पैसेज नंबर 5 में पहिरें में C, ॿिए में जेको आहे उहो छा थो इस्तेमालु थिए पियो, ॿिए में बि थींदो ट्रुथ एंड एक्यूरेसी, माना ॿिए में बि माना B आहे, इहो C न आहे, इहो ॿिए में B आहे 5 में, माना हिन में थींदो ट्रुथ एंड एक्यूरेसी. स्क्रीन शॉट कयो हिनखे, वरी जॾहिं पैराग्राफ खे तव्हां वराए पढ़ो वरी त इन्हनि खे स्क्रीन शॉट वारे नोट जेको तव्हां कयो आहे हिनखे सही करे वरी तव्हां हुनखे दफ़ो ॾिसंदो त तव्हांखे इलाही हेल्प मिलंदी इन जे मुताबिक़. त हिन में पैसेज नंबर 5 जे ॿिए में B ऐं C लिखिजी वियो आहे, इनखे करेक्ट कयो. इहो सिर्फ़ु आहे कहिड़ो, इहो आहे ट्रुथ एंड एक्यूरेसी, माना C आहे, इहो B खे कटे छॾिजो हिते. Thank you very much student for this third session, and then that is still ended this reading comprehension. We will again practice reading comprehension after completion few topics of grammars. Thank you very much again student.